Hello friends and welcome to the page Elite Up to Date. So we are launching this program Elite Up to Date and it is being launched by Elite IAS Academy. Through this program, we will be covering the current affairs on weekly basis. Our target year for the Civil Services Exam is 2020. And please remember that we are totally focused on Civil Services Exam. Therefore, the current affairs would be focused on Civil Services Exam only. We are beginning with this program from the date June 15th. So we will be covering the current affairs from June 15th and we will be covering it till you appear for your next 2020 exam. So in this particular edition, I am covering the topics from June 15th till June 20th. This is the part 1 and soon I'll be releasing the part 2 as well, so as your current affairs for this entire week are full and final. So let's begin. So friends, the first important topic is Global Peace Index. Basically, the important things to note are: what is Global Peace Index? Who releases it? Why is it important? And where does India stand? So to begin with, as we can see, Global Peace Index is released by Institute for Economics and Peace. Institute for Economics and Peace is based in Australia. So now, is it a government body? No, it is a think tank, Australia-based think tank. As simple as that. The next thing is what it does. It uses 23 qualitative and quantitative indicators to measure and compile the index. So what are these indicators? Do we have to learn all these 23 indicators? Again, the answer is no, because these 23 indicators are based on 3 themes. These 3 themes are societal safety and security, international and domestic conflict, and the degree of militarization. So basically, अगर हम लोग देखें इन 3 डोमेन्स को, हमारे कंट्री में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, we know it is not that good. If we see international, domestic and conflicts, then yes, there have been a lot many internal conflicts, and yes, there have been a lot many attacks on India from the neighboring countries. And if we talk about the militarization, then you know what? India, China, USA and some other countries are the largest countries that, expend a lot of money on their military. So they have huge military expenditure. So even the third point is justified. Now based on these 3 parameters, India has slipped by 5 points. So the total 163 countries were evaluated and India has secured 141 rank, which is a very poor rank. And that too, we have, degraded in position from the last year. And just to end this topic, Iceland ranked first and Afghanistan was the last. Now let's just have a look at the video. So
So I hope you understood what this concept is and how is this important for the exam. Let's move on to our next topic, which is multilateral convention to check tax evasion. Basically, एक कन्वेंशन है मल्टीलेटरल कन्वेंशन. इसको मल्टीलेटरल कन्वेंशन इसीलिए बोलते हैं बिकॉज मेनी कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ इट. ऑलमोस्ट 127 countries are a part of it. So that's why we call it multilateral convention. Now what this convention does? This convention has been implemented for the tax treaty related measures, basically to prevent base erosion and profit shifting. It was signed in Paris in the year 2017. India signed it in the year 2017, but now it has ratified it. So, ratified by India in 2019. Now, let's just understand why is this important. The convention will modify India's treaties in order to curb revenue loss through treaty abuse and base erosion and profit shifting strategies by ensuring that profits are taxed where substantive economic activities generating the profits are carried out and where value is created. So इसका मतलब ये है कि जहाँ पर मान लीजिए अगर कंपनी A है और कंपनी A बेस्ड है से स्टेट A में, कंट्री A में, तो वहाँ पर अगर वो अपनी एक्टिविटीज़ जनरेट कर रही हैं, प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, तो those profits would be taxed in that particular country only. It would not be allowed to shift those profits to any other country wherein either the taxes are low or there are no taxes at all. So where it is conducting those activities and actually generating the profits, there itself it will be taxed. Now, the convention enables all signatories to meet treaty-related minimum standards. So basically, treaty में कुछ minimum standards दिए गए हैं which every member country has to follow or maintain. अब दूसरा important point ये आ जाता है कि the convention will operate to modify tax treaties between two or more parties to the convention. So basically, those all who are the member of this convention, they can modify their respective tax treaties with each other so that they can fit into the rules of this convention. Will be applied alongside existing tax treaties. So इसका मतलब ये है कि आपको existing जो आपकी treaties है उसको modify करने की ज़रूरत है but scrap करने की ज़रूरत नहीं है. अब basically जो ये convention है किसका outcome है? It is the outcome of OECD G20 project. And one more important thing, 70% countries are non-OECD countries and non-G20 countries. So basically क्योंकि ये project OECD and G20 का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही countries इसका part हैं. 70% या 70% countries ऐसी हैं जो non-OECD हैं और non-G20 countries हैं. Let's move on to the next topic. ISRO plans to launch a space station. So now the important question is, what is a space station? Space station is an artificial satellite placed in orbit and is used as a long-term base for manned operations in space. इसका simple मतलब ये है कि जो आपका space station होता है, it works as a rest house in the space, rest house in the space. So basically अगर हम कोई astronauts को space में भेजते हैं to carry out any operation or any experiment, तो वहाँ पर they can actually stay. Those astronauts can actually stay in this rest house, carry out their experiments and then return back on Earth. Current scenario जो है उसके हिसाब से International Space Station is most famous. It hosts astronauts and spacecrafts and it has been in operation since 1988. But
by 2028 it will be dismantled. ISS जो है, it is a joint project between 5 participating space agencies. Yes, 5 participating space agencies, which are basically USA based NASA, Roscosmos of Russia, JAXA of Japan, ESA of Europe and CSA of Canada. अब जब 2028 में ये स्पेस स्टेशन डिसमेंटल कर दिया जाएगा, then what? Then how will the astronauts be carrying out their operations in space? उसके लिए ये प्रोविजन है कि यूएसए का ऑलरेडी ये स्पेस स्टेशन है, रशिया is also into the phase of developing one, and China will be launching its space station in 2020. So basically these 3 countries as of now have the space stations. Just mind the word, China will be launching it in the year 2020 and other 2 already have it. So if the question comes, is India the first country or the second country to launch it? No. India would be the 4th one to launch it, because we will be launching it after launching after 2022. So before that, we won't be launching it, and therefore we become the 4th country. Now, how will this space station look like? It will be similar to the International Space Station, but smaller in size. Iska weight 20 tons hoga, and it will take another 5 to 7 years to be constructed. ये space station क्या काम करेगा? It will conduct microgravity experiments in space, and their astronauts can stay for 15 to 20 days. Basically, हम ये space station क्यों launch करना चाह रहे हैं? So we are launching this space station as an extension project of Gaganyaan mission. Gaganyaan mission का simple mission है कि 2 या 3 astronauts को, Indian astronauts को space में maximum for a week भेजना, and ये 2022 में launch किया जाएगा. So basically it will be the manned mission to space, and to basically facilitate those astronauts, we want to build an Indian space station. Indian space station जो होगा would be stationed at an altitude of 400 kilometers from Earth. Now let's see the important information. So I hope it pretty much clears the topic. Next in line is SRG Space Telescope. Spectrum Röntgen Gamma Space Telescope. It is being developed by German and Russian team. इसका purpose क्या है? इसका purpose है to detect 3 million supermassive black holes from the Milky Way. ये करेगा क्या? ये 3-dimensional X-ray map universe का लेगा और it will help us unveil the unknown supermassive black holes, dark energy and stars.
हम लोग जैसा कि मूवीज़ में भी देखते हैं कि आजकल ब्लैक होल्स, डार्क एनर्जी, स्टार्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है टू लर्न अबाउट बेसिकली द अदर वर्ल्ड. सो ये साइंटिस्ट भी इसी लाइन पे वर्क कर रहे हैं सो दैट द रील बिकम्स द रियलिटी. बेसिकली इस मिशन में जैसा कि आपने देखा 3D एक्सरे मैप बनाया जाएगा पूरे यूनिवर्स का. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज it will survey the sky 8 times and track the evolution of the universe and dark energy. Next important thing ये है कि ये 4 साल का मिशन होगा. It will be the first telescope to create full map of sky in this part of spectrum. So please यहाँ पर ये ज़रूर नोट कीजिए कि ये first telescope होगा to create full map of sky in a particular part of spectrum. इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई टेलीस्कोप पहले रहा नहीं है जिसने पूरी मैपिंग की हो स्काई की. बट मैपिंग स्काई की ज़रूर हुई है, लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम है आपका 0.2 to 10 and 5 to 30 keV, इस स्पेक्ट्रम में मैपिंग नहीं हुई है. सो दिस विल बी द फर्स्ट टेलीस्कोप इन दिस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम. प्लीज माइंड इट. Mission will have 2 independent telescopes, which will be eRosetta by Germany and ART-XC by Russia. Let's move on to our next topic, SICA Summit. SICA Summit है क्या? It is a confidence building measure in Asia. It is a pan-Asian forum for enhancing cooperation and promoting peace, security and stability in Asia. As simple as that. It started its operation in 2002. It is just for the Asian countries, and the present summit was the 5th summit which was held in Tajikistan, Dushanbe. India is का member कब से है? Is it a new member? No. India has been its member since its inception. And जो late Prime Minister Atal Bihari Vajpayee जी थे, he participated in the first SICA summit in 2002. 5th summit का जो थीम था वो था Shared Vision for a Secure and More Prosperous SICA Region. That's it from this topic. Now let's come to a more static topic which is on cess. जैसा कि आपको पता होगा, cess is not a tax but cess is levied on the tax which has already been paid. So it is levied on tax payable and not on the taxable income. So if I explain you the concept, let's say you earn $30 lakhs, okay? The taxes that you pay are, say, 5 lakhs. So जो ये cess है, it is not levied on these 30 lakhs. It is the tax which is levied on these 30 lakhs. But जो cess है, cess will be levied on 5 lakhs. So it is levied on the tax payable. So because you are paying rupees 5 lakhs tax, so it will be levied on those rupees 5 lakhs. Cess can be levied on both direct and indirect taxes. Cess is levied to meet a specific purpose. Now वो specific purpose कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने एजुकेशन सेस लगाया है, कोल सेस लगाया है, इन्वायरमेंटल सेस है, कृषि कल्याण सेस है. तो इन सारे एरियाज को प्रमोट करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए ये सेस लगाया गया है. जितने भी अब हमारे टैक्सेस और सेसेस हैं वो कहाँ जाते हैं? क्या वो सरकार घर में रखती है या फिर क्या वो बैंक में रखे जाते हैं? उसका सिंपल आंसर है taxes and cesses are credited in the consolidated fund of India, which is an account of the government of India. These proceeds are solely held by the central government and cannot be shared with the state governments. अब अगर आपको इन सेस को यूटिलाइज करना है, इन प्रोसीड्स को यूटिलाइज करना है, तो गवर्नमेंट हैज़ टू क्रिएट अ डेडिकेटेड फंड, क्योंकि अगर वो फंड नहीं क्रिएट होगा तो ये सेस के प्रोसीड्स हम यूज़ नहीं कर सकते एंड दे विल रिमेन अनयूटिलाइज्ड. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, मैंने आज न्यूज़पेपर में एक डेटा पढ़ा. डेटा में ये बताया गया था कि
increase in the amount of education cess collected via corporation tax and income tax. So basically जो education cess है उसमें increment पाया गया है. Okay, so there has been an increase, and when the tax proceeds increase, the cess collected also rise. That's obvious. अब जैसे एजुकेशन सेस है उसको यूटिलाइज करने के लिए आपका प्रारंभिक शिक्षा कोष या उच्चतर शिक्षा कोष फॉर हायर एजुकेशन क्रिएट किया गया था. लेकिन जो हायर एजुकेशन के फंड्स हैं दे आर डॉर्मेंट एंड अनयूटिलाइज्ड. अगर हम कैट का रिपोर्ट देखें तो 94,036 करोड़ प्रोसीड्स आर स्टिल लाइंग अनयूटिलाइज्ड. और आपको मजे की बात पता है 2017 से 18 में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है स्कूल और हायर एजुकेशन में वो 79,000 के करीब था, 79,000 करोड़. लेकिन जो अनयूटिलाइज्ड फंड्स हैं वो तकरीबन जैसा हमने देखा 94,000 करोड़ के आसपास हैं. सो दैट मीन्स दे आर लाइंग अनयूटिलाइज्ड. With this, we come to our next topic, which is on Conference of Parties 14. Basically, this was the 14th such conference, and that's why it's called Conference of Parties 14. ये COP 14 है under UNCCD, which is the United Nations Convention to Combat Desertification. Basically, इस टाइप की जो COPs हैं वो UNFCCC के अंडर भी होती हैं, UNCCD के अंडर भी होती हैं. तो ये बात याद रखने वाली है कि जो COP 14 है ये UNCCD की थी जो अभी सितंबर 2019 में इंडिया ने होस्ट की थी. इंडिया होस्टेड द 14th सेशन. अब बेसिकली जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द कन्वेंशन एज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी that today consists of 197 governments and regional economic integration organization. अब ये जो पार्टीज हैं बेसिकली लोग कब कब पार्टी करते हैं. द सिंपल थिंग इज दे मीट एवरी 2 years and they have been meeting since 2001 to 30, not exactly. बेसिकली जो लास्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी वो 2017 में ऑर्गेनाइज की गई थी और वो चाइना ने होस्ट किया था. और 2019 वाली जो 14th ऐसा सेशन है वो इंडिया ने होस्ट किया है. एंड इसकी स्टार्टिंग 2001 में हुई थी और 197 गवर्नमेंट्स जो हैं वो इसका पार्ट हैं. सो अब जो 2019 में कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इंडिया विल टेक प्रेसिडेंसी फ्रॉम चाइना फॉर 2 years, क्योंकि 2021 में अगली कॉन्फ्रेंस होगी और किसी और कंट्री में होगी. अब बेसिकली ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि all these parties will have access to Earth observation data on the trends in land degradation dating from 2000, and also they will be receiving the first report on desertification and climate change prepared by IPCC, which is the Intergovernmental Panel on Climate Change. मैं इसमें आपको IPCC के बारे में नहीं बता रही हूँ, so it's your homework to read about IPCC. लेकिन हाँ ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कि ये वाली कॉन्फ्रेंस या ये वाली समिट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सारी कंट्रीज़ को एक एक्सेस मिलेगा अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा पे सिंस 2000 ऑनवर्ड्स की लैंड डिग्रेडेशन का क्या स्टेटस रहा है. एंड ऑल्सो दे विल बी गेटिंग द फर्स्ट रिपोर्ट ऑन डिजर्टिफिकेशन फ्रॉम IPCC. नाउ व्हाट इज UNCCD? So UNCCD is a convention to combat desertification. इसमें करते क्या है हम लोग नेशनल एक्शन प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं लाइक विद इन कंट्री. अगर हमारी सरकार डिजर्टिफिकेशन को मिटिगेट करने के लिए अर्बनाइजेशन एफॉरेस्टेशन कर रही है, पेड़ और लगा रही है, सो बेसिकली इट इज़ ट्राइंग टू कॉम्बैट द डिजर्टिफिकेशन. ऑल्सो अगर हम लोग हेल्दी इरिगेशन मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं, healthy irrigation measures, afforestation. So these are the national programs which we are running and we are doing it with the help of international aid. Why? To combat desertification. Basically, it is the only legally binding international agreement that links environment and development issues to land agenda. सो लैंड से जो भी डील करती हुई हमारी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं
उनमें से सिर्फ UNCCD एक ऐसा अग्रीमेंट है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो बाइंडिंग है. So all the 197 countries who are party to it are bound by its mandate. ये applicable उन countries में है which are experiencing serious drought and or desertification, particularly Africa. इसको साइन किया गया था 1994 जर्मनी में. एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, दिस इज द ओनली कन्वेंशन स्टेमिंग फ्रॉम अ डायरेक्ट रिकमेंडेशन ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21. सो बेसिकली रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा में 21 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई थी और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी. तो उन रिकमेंडेशंस में से एक रिकमेंडेशन थी कि हमें लैंड को कैसे प्रिजर्व करना है, डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, and how to make a world better place to live in. So ये जो डायरेक्ट रिकमेंडेशन है, यही एक ऐसी रिकमेंडेशन है जिसके ऊपर फॉलोअप्स हुए. बेसिकली फॉलोअप्स तो दूसरे रिकमेंडेशंस पे भी हुए, बट इसके ऊपर कुछ एक सब्सटेंसिव बॉडी इस्टेब्लिश करी गई विच इज़ UNCCD. एंड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, रियो कॉन्फ्रेंस, वो भी 1994 में हुई थी. एंड जो उसका रिजल्ट था वो था 1994 जर्मनी में UNCCD का formation. Basically, India will launch the Bond Challenge to enhance our capacity for forest landscape restoration. ये जो हम Bond Challenge को accept किया है हम लोगों ने, it will be implemented during a pilot phase of 3.5 years. So pilot phase ऐसा होता है जो कि कुछ states में launch किया जाता है, ना कि पूरी country में, because it is done on experimental basis. So ये 5 states में लॉन्च किया जाएगा एंड जस्ट फॉर द 3.5 years. अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हम इसको फुल टाइम बेसिस पे लॉन्च करेंगे. एंड ये किसी लिए है? फॉर फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन. बेसिकली अब जो ये पूरा चैलेंज है, बॉन्ड चैलेंज है, विच इंडिया हैज ऑल्सो अग्रीड टू, इट इज एन एफर्ट towards bringing 150 million hectares of world's degraded and forested land under restoration by the year 2020. So 150 मिलियन हेक्टेयर्स का जो लैंड है उसको 2020 तक रिस्टोर किया जाएगा और जो 350 मिलियन है उसको 2030 तक. हर साल 17 जून 2019 को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट ऑब्जर्व किया जाता है. 1994 में जब UNCCD अप्रूव हुआ था, जब बेसिकली ये मेजर स्टार्ट किया गया था, उसके अगले साल ही 1995 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया था कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल 17 जून 2019 को. 2019 की थीम थी लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर. एक बात और जो इम्पोर्टेंट है नोट करने वाली वो ये है कि इंडिया का 30% लैंड ऐसा है विच इज़ डिग्रेडेड. और ये कोई हवा में बात नहीं है, ये कोई आपकी और हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं है, ऐसा इसरो के 2011-13 के स्टडी ने बताया है. सो बेसिकली देखा जाए तो जो ये 30% का लैंड डिग्रेडेड है, ये 2011 से 13 का जो डेटा है उसके ऊपर बेस्ड है और उसके मुताबिक ये इंक्रीज ही हुआ है, कम नहीं हुआ. लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट द वीडियो. So I hope the topic is pretty much clear to you, and with this I am done with the part 1 of the current affairs series.
So just wait for the part 2 so that your 15th till 20th June of current affairs can be completed. Stay tuned, stay up to date. Bye-bye.